Chapter 9, Reaching the Age of Adolescence. Match the columns. Growth of the hair in the armpit. It is observed in boys and girls both. Second is menstruation. It is also known as the menstrual cycle. Why? Because it comes after every 28 days after the process of ovulation. Third, balanced diet. To maintain the proper balanced diet, we need to consume proper nutrients. Fourth, self conscious. This feature or this characteristics is observed at the age of adolescence, where the adolescents or boys or girls get conscious about themselves. Fifth is chemical substances. This is also the other name of the hormones. Why? Because hormone is a kind of a chemical which is released into our body. Next, give one word for the following. A. The specific organ upon which a hormone acts, that is the target site. Whenever at any particular organ a particular hormone has to react or show its growth or change at that particular part, that organ or that part is known as the target site. B. The gland present at the base of the brain, also called the master gland. It is also called as a pituitary gland. Okay. Now this is a gland which is present at the base of the brain. Why? Because it controls all the growth which takes place into our body. That's why we call it as a master gland also. Next, the monthly cycle in females during which an egg is released. That is a menstrual cycle. It is a cycle which takes place after every 20 days after the release of the egg from their body and the egg gets matured. Then they get their periods, or we also call it as a menstrual cycle. D. The hormone secreted in males which causes the development of secondary sexual characters in them. This is also known as the testosterone. Now this is a hormone which is released by the sexual organs of the males, which also causes a development of their secondary sexual character in their body. Fifth is the stage of development at which an individual is capable of reproduction. Now this is the stage where an individual or a boy or a girl are capable of doing the process of reproduction. That stage is known as puberty. Okay. B. Short answer type questions. What do you understand by the term adolescence? Now the period or the stage of transition from childhood to adulthood is called adolescence. Okay, so the stage or the time period from the childhood to the adulthood, that time period is known as the adolescence. What are the characteristics of puberty? Characteristics of puberty are as follows. First, development of secondary sexual characters, that is the development of the sex organs and the release of the hormones from the testes and the ovaries. Second is increase in height. As the girls and boys enter into the stage of puberty, their heights keep on increasing from 12 to 13 years of the age to the 18 to 19 years of the age. Okay. Then the third is change in the body shape. We see a rapid change in their body shape. In boys, we see the change in their broadening of the shoulders, and in girls, we see the increase in their breast size. Then fourth is the hair growth. In boys and girls both, we see the growth of the hair in the armpits and the pubic region, that is the private part. Next is the voice change. Now we see a rapid change in boys and girls as the boys start growing or enter into the age of puberty. Their voice started becoming harsh, and the voice box or the larynx which is present in their throat or the neck region, it started producing out, which we call as the Adam's apple, right? And in girls, the voice becomes smooth as they grow or enter into the stage of the puberty. Next is the development of the sex organs, that is similar to the secondary sexual characters. Then next is the increased activity of sweat and sebaceous gland. So now as we enter into the stage of puberty,
our body started releasing various hormones for the growth or the changes into our body, out of which some hormones are also responsible for the release of the sweat into our body and the growth of acne and pimple on our face or on skins because of the release of the sebaceous glands, which is also known as the oil glands. Okay. Next, last one is the mental, intellectual and emotional maturity. See, this is the stage where we see a rapid change or various changes into our mental health, intellectual health and emotional health, right? This is a stage where we are taught or where we feel responsible for various things, right? We started getting emotional regarding the things, we started being touched, we started being you can say happy, sad or loved at this stage, right? So there are various maturity or various changes being seen in the mental, intellectual and emotional health into our body. Okay. Next question, question number 3. State the role of hormones in initiating reproductive functions. Now the hormones secreted by the endocrine glands are directly poured into the bloodstream to make them reach a particular part in the body called the target site. The male hormone testosterone is released by the testes, which bring about the changes in boys such as broadening of shoulders and growth of facial hair. In girls, the ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which helps in the development of breasts. In both boys and girls, hair grows in the armpits and pubic area. These hormones are controlled by another endocrine gland called the pituitary gland. The pituitary gland secretes many hormones. One of them controls the maturation of eggs in the ovary and the production of sperms in the testes. Now the hormones which are secreted by the endocrine glands, that is a particular hormone which is secretes, and that particular hormone has to go to a particular part of our body or particular gland or the region. That particular gland or region is known as the target site, where they go and show the changes into our body or at a particular region of our body. Next, the male hormone, which is also known as the testosterone, is released by the testes, which is the sex organ of the boys or the male. They bring about the changes in the boy's body by broadening their shoulders and showing the growth in their facial hair. And in girls, the ovaries begin to produce the female hormone. Ovary is the female sex organ into their body, and they start releasing the female hormone, which is also called estrogen. They help in the development of the breast in female body. And in both boys and girls, there is a growth of the hair into the armpits and their pubic region. And these hormones are purely controlled by the another endocrine gland, which is called the pituitary gland. What is the other name of the pituitary gland? Master gland, right? The other name of pituitary gland is master gland, right? So why we call it as a master gland? Because it controls the release of the hormones from the other endocrine glands, right? Now the pituitary gland secretes many hormones, and one of them controls the maturation of the eggs into male and female body and the release of the sperms in the testes and the release of the eggs in the ovaries. Okay. Now fourth is the ovulation. Now what is ovulation? With the onset of puberty, onset means start. Okay. Onset means start. As the stage of puberty starts, one ovum matures in the female body and is released by the ovaries once every 28 days. मतलब हर 28 days के बाद जो ओवम है वो ओवरी में मच्योर होता है और फिर रिलीज होता है, बिकॉज ऑफ विच द गर्ल्स गेट देयर menstrual cycle or menstruation. But to get to that stage, they need to go with the process called ovulation. Okay. Fifth one, why do adolescents suffer from pimple or acne breakouts? Why we occur or why we get pimple or acne as we enter into the stage of puberty? The reason is that the release of the sweat and sebaceous glands into our body is getting access because of the growth into our body,
राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है उसको उसमें चेंजेस ला सके और उसमें हेल्प कर सके, जिसमें से स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, राइट, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक। और जैसे ही हमारे बॉडी में एक्सेस स्वेट रिलीज होगा और एक्सेस सिबेशियस ग्लैंड्स रिलीज होंगे, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक्ने और पिंपल शो करने लगते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सेस रिलीज ऑफ द स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड्स। क्योंकि जब कोई चीज़ एक्सेस होती है तो उसको किसी ना किसी तरीके से बॉडी से या किसी चीज़ से बाहर आने को चाहिए होता है, राइट। तो हमारे बॉडी से जो ये ग्लैंड्स हैं वो एक्ने और पिंपल के फॉर्म में हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, ताकि अगर वो एक्सेस अमाउंट में होगा तभी वो हमारे बॉडी से रिलीज होगा, और वो रिलीज किस फॉर्म में होता है, एक्ने और पिंपल के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। वाई? बिकॉज द हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ or in bringing about the changes that help a child to grow into an adult. Okay, and these hormones are secreted by the reproductive organs and the entire process is controlled by the endocrine system. Since हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी ग्रोथ होता है प्यूबर्टी के एज में, वो कंट्रोल कौन करता है, हॉर्मोन्स करते हैं, ठीक। वो शो कौन करता है, हॉर्मोन शो करते हैं। तो जो हॉर्मोन्स है ये रिलीज कौन करता है, हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में चेंजेस और ग्रोथ को शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज गर्ल्स नीड टू कंज्यूम फूड रिच इन आयरन। वाई? बिकॉज सिंस द गर्ल्स स्टार्ट menstruating at puberty they should consume food rich in calcium, iron and zinc. क्यों? क्योंकि गर्ल्स जो है वो जैसे ही प्यूबर्टी की एज में पहुंचती हैं दे स्टार्टेड गेटिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ऑफ विच जितने दिन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहती हैं देयर बॉडी बिकम्स वीक, देयर बॉडी बिकम्स टायर्ड, they releases a lot of blood and nutrients from their body, because of which they need a good diet, a healthy food which is surely rich in calcium, iron and zinc, so that their body should be strong and healthy and they don't get tired easily. Okay, next is one must say no to drugs. Now, drugs are the addictive and have adverse effects on the body's development. In some cases, using affected needles to take drugs can also cause AIDS. The reason is that why we started taking the drugs. No तो बाद में बोलेंगे, पर पहले ये पता करते हैं कि हम लेते क्यों हैं ड्रग्स। क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हम बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव बहुत जल्दी होंगे तो उसको अडेप्ट करने में हमें टाइम लगता है, राइट। और जब वो चीज़ें हमारे बॉडी के साथ होती हैं तो उसको अडेप्ट करने में और भी हमें टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में, हमारे इमोशंस में, हमारे मेंटल स्टेट में शो होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कंट्रोल करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। कुछ लोग होते हैं जो इजीली कंट्रोल कर लेते हैं या कुछ समय बाद उनको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, वो अडेप्ट कर लेते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रेसफुल हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड गेटिंग the drugs or alcohols or they started smoking, they move towards the bad side of their life, जिसकी वजह से उनके बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो रुक जाता है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है, वाइल टेकिंग द ड्रग्स, इफ़ वी टेक द ड्रग्स टू द इन्फेक्टेड इंजेक्शंस, जिसकी वजह से वी आर हैविंग अ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज कॉल्ड एड्स, विच इज इनक्योरेबल डिजीज, राइट। नाउ योर होमवर्क इज टू व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एड्स, or just comment me down below the full form of AIDS. I know most of you know that, but I want the answer in the comments. What is the full form of AIDS? Okay, let's move to the next question. Adolescents should take bath every day. Why? First of all, whether you are at any stage of your life, a proper cleanliness is very important for ourselves, to keep us fresh, to keep us healthy. And out of that, one is taking a proper bath daily. Now, adolescents show the increased activity of sweat and sebaceous glands, which may lead to foul body odor.
Therefore, it is important to maintain cleanliness and good personal hygiene. One should take bath every day to avoid bacterial infections. ठीक, as we start growing, as our body start releasing the various hormones into our body, one of which is a sweat gland. तो जिसके से हमें स्वेट बहुत होता है, तो our body starts absorbing that sweat and converts it into the bacterial forms into our body. So if we don't take bath every day, we don't wash off our dirty bacteria from our body, तो जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे उसको बैक्टीरिया में कन्वर्ट करती जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, फ्रेश नहीं लगती है, हम लेज़ी फील करते हैं और हमारे लिए वो अनहाइजीनिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होने के बहुत सारे चांसेस हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हाइजीन ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑन आवर बॉडी, राइट. सो इसीलिए हमें नहाना रोज़ चाहिए, बाथ रोज़ लेना चाहिए, and it also helps to keep us healthy and fit and keep us avoid or keep us away from the bacterial infections. Okay, so next question, where are the following glands located in the human body? First is pituitary, it is located at the base of the brain. Second is thyroid, it is located at the base of the throat. Third is pancreas, it is located below the stomach. Fourth is adrenals, it is located above our kidneys, right? Alright, so the next exercise, C, long answer type questions. First, state the role of the following hormones in the body. First is insulin. It regulates the blood sugar level in the blood. Deficiency of this hormone causes diabetes. Alright, now insulin. Now this hormone, the release of this hormone plays a very important role in our body to control the blood sugar level in our blood, and the deficiency of this hormone can lead us to the disease called diabetes. Okay, next is adrenaline. Now it prepares our body for emergency situations like fight, flight or fear and helps the body to adjust to stress, etc. Now the emergency situations, now what are these situations? Like if we get fear, अगर हमें डर लग रहा है या हमारे बॉडी को किसी डिजीज से लड़ना है या फाइट करना है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस लाइक कोरोना और यू कैन से कोविड, लाइक, तो उनसे लड़ने के लिए, उनके थ्रू हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एड्रेनालाइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग आर इमोशंस टू, राइट. हमारे बॉडी में जो इमोशंस होते हैं, वेदर इज इट अ स्ट्रेस, हैप्पी, सैड, क्राइंग, एंगर, जेलस, वट एवर इमोशंस वी फील इन आवर बॉडी, that is because of the release of the hormones called adrenaline. ठीक, अगर adrenaline जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, राइट, तो वो भी हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है. ठीक है, तो जब भी हमें स्ट्रेस होता है, वी क्रेव फॉर समथिंग, वी वांट टू बी हैप्पी, तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? एड्रेनालाइन हार्मोन. Next is estrogen. Now it controls the development of the secondary sexual characters in females. Testosterone, it controls the development of secondary sexual characters in males. Fifth, thyroxine. Now it helps in metabolism, growth and development in our body. Deficiency of this hormone causes the goiter. Okay, now with the deficiency of this hormone, we suffer with a problem called goiter. What is the other deficiency of which? Nutrient or vitamin or mineral or any salt or anything. किस और वजह की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है? आई वांट द आंसर. कौन सा ऐसा विटामिन मिनरल है जिसकी वजह से हमें गोइटर होता है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से, लैक ऑफ विच थिंग वी सफ़र विथ गोइटर, वो भी मुझे जानना है. ओके, कमेंट इट डाउन बिलो. ऑलराइट, चलो. नाउ थायरॉक्सिन ग्लैंड और थायरॉक्सिन हार्मोन helps our body in growth, in metabolism. Metabolism means to prepare our body strong, to help our body to fight against diseases and to keep our body strong. Okay, now the second question, explain in detail the changes which take place in the female body during the menstrual cycle. अब menstrual cycle के time
जो फीमेल बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं उनके बारे में डिटेल में बताना है, ठीक है। सो लेट्स सी द आंसर। Menstrual cycle is the cycle of releasing a mature ovum at the end of 28 days. This is stimulated by the estrogen and progesterone hormones. During this period, the wall of the uterus becomes thick to receive the egg. Estrogen helps in the development of breast. Okay. सो अब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो साइकिल होता है उसमें मैच्योर ओवम क्या होता है, रिलीज होता है आफ्टर एवरी 28 डेज, okay, and this is stimulated or this is controlled. Stimulated means controlled. Now this process or this cycle is controlled by the release of the estrogen and progesterone hormone in our body from our sex organs, that is the ovaries, which is present in females. Now during this period, the wall of the uterus, now uterus is the organ which is present into the female body which gives birth to the baby, which helps in the development and growth of the baby, right? So the wall of the uterus, the organ, becomes thick to receive the egg, okay. As the ovum matures into the ovaries, it gets into the uterus where the walls of the uterus, that is the skin of the uterus, becomes thick so that they can receive the egg, okay, so that they can receive the egg and helps it in the further development into a new individual, right? Now estrogen also helps in the development of the breast in a female body, right? Now third one, list and explain the changes that are observed in males and females during adolescence. Answer. During adolescence, the body undergoes various changes and develops secondary sexual characters. These changes mark the onset of puberty. नाउ अब इसमें हमें क्या बताना है कि क्या चेंजेस मेल और फीमेल बॉडी में ऑब्जर्व किए जाते हैं एडोलेसेंस के स्टेज पे या उस पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। सो एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी और यू कैन से एडोलेसेंस, द जो बॉडी है वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है और जिसमें से बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी डेवलप होते हैं। तो जैसे ही प्यूबर्टी का स्टेज शुरू होता है वैसे बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, जिसमें से पहला होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नाउ ड्यूरिंग adolescence, male and female hormones are produced. In males, testes produce the male sex hormone called testosterone, and in females, the ovary produces female sex hormones called estrogen and progesterone. Now, these hormones are responsible for the development of secondary sexual characters in males and females and prepare them for reproduction. Okay, अब क्या होता है इसमें जो पहला secondary sexual characters है in this जो एडोलेसेंस पीरियड होता है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल हार्मोन्स क्या होते हैं प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, रिलीज होना शुरू होते हैं। मेल्स में जो टेस्टिस होता है, जो उनका सेक्स ऑर्गन होता है, वो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है जिससे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और फीमेल्स में जो ओवरी होता है विच इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट रिलीजेज अ फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके, एंड द फीमेल बॉडी रिलीजेज टू हार्मोन्स, okay, which help in the development of the female body, and these hormones are wholly responsible for the development of the secondary sexual characters or the changes occurs in the male or female body, okay, and prepare them for reproduction. अब जैसे ये hormones release होना शुरू होते हैं वैसे ही जो human और you can say गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती रहती है फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, right? Now next is the increase in height. Now there is a sudden increase in height in both the sexes. Generally girls grow faster than boys, but both reach their maximum height by the time they attain the age of 18 years. ठीक, अब क्या होता है increase in height, जैसे ही puberty एज में जाते हैं गर्ल्स और बॉयज़ क्या होता है सडन इंक्रीज उनके हाइट में देखा जाता है। अचानक से क्या होता है हाइट में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है as they enter this stage, okay. जनरली जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती हैं, लेकिन दोनों ही अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं बाय द टाइम जैसे ही वो 18 एज पे पहुंचते हैं। 18 ईयर्स ऑफ एज पे वो जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही जो उनकी हाइट है वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद से फिर उनकी हाइट क्या होती है बहुत
कम ग्रो होती है या वहीं पे रुक जाती है। बहुत से की तो थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द एक्सरसाइजेज दे डू उनकी फिर भी ग्रो होती है, लेकिन बहुत रैपिडली नहीं होती है, बहुत स्लोली ग्रो होती है, बट किसी किसी क्या होती है वहीं पे स्टॉप हो जाती है उनकी हाइट। ठीक है। थर्ड इज द चेंज इन द बॉडी शेप एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ। इन बॉयज जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं और जो उनके मसल्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है। और गर्ल्स में जो हिप्स हैं वो ब्रॉडन हो जाती हैं, जो पेल्विक रीजन है वो वाइडन हो जाते हैं। ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है। अब उनके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। उनमें जो बॉडी में ग्रोथ होता है, बॉयज़ में जो उनका शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है। और उनके जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है। या मसल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब कि उनके स्किन पे से दिखने लगता है, उनके मसल्स क्या होते हैं थोड़े आउटग्रो हो जाते हैं, वो प्रॉपरली स्किन के गो थ्रू दिखने लगते हैं। ठीक है। एंड गर्ल्स में जो हिप्स हैं वो ब्रॉडन हो जाती हैं और जो पेल्विक रीजन है वो वाइडन हो जाता है। ब्रेस्ट भी इंक्रीज होता है साइज में बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द मेमोरी gland. There is a memory gland present in the chest of the female body which grows by the time and shows the growth in the breast or in the chest region of the girls. Then is the hair growth. In both the sexes, hair starts growing in the armpits and in the pubic region. Boys develop facial hair, that is mustache and beard and hair on the chest. दोनों ही सेक्सेस में जो हेयर है वो उनके आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में, दैट इज अ प्राइवेट पार्ट, वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ में फेशियल हेयर भी देखा जाता है, जैसे कि मुस्टैच है, बियर्ड है, और उनकी चेस्ट पे भी हेयर ग्रो होने लगते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन इज वॉइस चेंज, not the last one but the fifth one, that is the voice change. In boys, the voice box or the larynx increase in size which result in the change in voice. The increase in size is more prominent in boys and the enlarged voice box can be observed as a protruding part of the throat called Adam's apple. In girls, it is not visible as it is small in size. In general, girls have a high pitched voice whereas boys have a deep voice. राइट। जो वॉइस चेंज, बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स और जो लैरिंग्स होता है वो साइज में क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो वॉइस है वो भी चेंज होती है। तो जो साइज में इंक्रीज होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मतलब वो ज़्यादा विजिबल होता है बॉयज़ में। एंड ठीक है, प्रोमिनेंट मीन्स विजिबल होना। ठीक है। वो ज़्यादा विजिबल होता है बॉयज़ में और जो वॉइस बॉक्स है वो एनलार्ज हो जाता है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एज प्रोट्रूडिंग पार्ट, मतलब निकले हुए पार्ट की तरह वो शो होता है थ्रोट में, गले में, जिसे हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है ये विजिबल नहीं होता है क्योंकि ये साइज में स्मॉल होता है, इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड इन जनरल गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्ल्स जैसे जैसे इस स्टेज पे आती हैं उनका वॉइस का जो वॉइस बॉक्स होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इट ग्रोज स्मॉलर इन साइज। ठीक है। वो बढ़ता नहीं है, वो बल्कि कम होने लगता है, जिसकी वजह से देयर वॉइस बिकम सॉफ्टर बट हैव अ हाई पिच्ड। ओके। बल्कि बॉयज़ में जो होता है उनका वॉइस का डीप होता है, क्यों? क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, वो प्रोट्रूडिंग होने लगता है, वो ग्रो होने लगता है, बिकॉज ऑफ विच देयर वॉइस बिकम्स डीप, दैट इज हार्श as they grows further. Now the last is the development of the sex organs. In boys, testes और जो penis है it develops completely and testes start producing sperms. In girls, ovaries enlarge and start producing matured eggs. अब बॉयज़ में क्या होता है, टेस्टिस एंड पीनस जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है। या वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और टेस्टिस जो है वो मेल हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं और वी कैन कॉल इट एज अ टेस्टोस्टेरोन, राइट। और गर्ल्स में जो ओवरीज है वो एनलार्ज होती हैं और वो धीरे धीरे मच्योर्ड एग्स को प्रोड्यूस करना शुरू करती है विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज द ओवम और द एग विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरी। Okay. Fourth question, explain the different ways by which an adolescent can look after his or her physical and mental health. कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे एक अडोलसेंट और या फिर मच्योर्ड बॉय और गर्ल है वो कैसे अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर कर सकता है? Adolescent can look after his or her physical and mental health in many ways. It is better for adolescents to enjoy some outdoor activities
such as walking, jogging, and other outdoor games. It improves their blood circulation and keeps them fit and healthy. After all, a healthy mind resides in a healthy body. जो मच्योर्ड बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, फीमेल मेल्स होते हैं, अडोलसेंट होते हैं, वो अपने बॉडी को या अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लुक आफ्टर कर सकते हैं बहुत से तरीकों से. ये बेटर होता है एडोलसेंट के लिए बाहर के गेम्स को एंजॉय करना, बाहर के एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स. ठीक है, वाई? बिकॉज इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन टू देयर बॉडी एंड कीप देम फिट एंड हेल्दी. आफ्टर ऑल, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. क्योंकि माइंड अगर हेल्दी होगा तभी आपकी बॉडी हेल्दी दिखेगी. अगर माइंड रेस्ट पे होगा या लेज़ी होगा या टायर्ड होगा तो आपकी बॉडी भी क्या होगी? लेज़ी दिखेगी, टायर्ड दिखेगी. इसीलिए टू कीप योर बॉडी हेल्दी वी शुड कीप आवर माइंड हेल्दी. फिफ्थ वन, वाई शुड adolescents stay away from drugs? What can they do in case they need help? Answer: sudden changes in the body leave the adolescents in a state of deep thinking, confusion, and insecurity. He or she becomes vulnerable and falls prey to drugs and wrong habits. Drugs are addictive and have adverse effects on the body's development. In some cases, using infected needles to take drugs can also cause AIDS. At this stage of life, one should be careful in selecting friends and should take guidance from their parents and elders. In case of any problem, they should communicate with their parents or counselors. They should plan and try to involve themselves in creative and productive work of their interest. अब इसमें क्या होता है? As we enter into the stage of adolescence, there are sudden changes observed into our body. हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, भले हम क्या होते हैं धीरे धीरे बहुत गहराई तक सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसी के साथ ऐसा क्यों, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. राइट, हम कंफ्यूज होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, हम इनसिक्योर फील करते हैं, चाहे खुद को लेके चाहे किसी और को लेके. राइट, हम धीरे धीरे क्या होते हैं? वल्नरेबल हो जाते हैं, हम मिजरेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं. राइट, जिसकी वजह से वी स्टार्ट फॉलिंग इनटू द ड्रग्स एंड इनटू द रॉन्ग हैबिट्स. ड्रग्स जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं. ठीक है, एडिक्टिव मीन्स जिसकी लत लग जाती है. ठीक है, एंड वी हैव एडवर्स अफेक्ट, जिसका हमारे बॉडी पे बहुत बुरा अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, ग्रो नहीं हो पाती है. ठीक, कुछ केसेस में क्या होता है? वाइल टेकिंग द ड्रग्स, इफ़ वी यूज इन्फेक्टेड इंजेक्शंस और नीडल्स, वी कैन ऑल्सो हैव द डिजीज कॉल्ड एड्स विच इज़ इनक्योरेबल, जैसा पहले मैंने बताया. ठीक, नाउ एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ वी आर going through various changes into our body, into our mental state, into our emotional state. We should always careful in selecting the friends and we should always take guidance from our parents and elders. हमें अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक ऐसी स्टेज होती है जिस पे हम डिसाइसिव होने लगते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, लेकिन कभी कभी हमारे डिसीजंस क्या होते हैं? हमारे लिए ही गलत होने लगते हैं. हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही है, बट कभी कभी वो सही चीज़ भी हमारे लिए सही नहीं होती है, वो गलत निकल जाती है. राइट, सो इसीलिए हमें कुछ चीज़ों को संभल के सेलेक्ट करना चाहिए, कुछ लोगों को संभल के सेलेक्ट करना चाहिए कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं. या अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, वी शुड ऑलवेज कंसल्ट टॉक टू विथ आवर पेरेंट्स एंड आवर एल्डर्स कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं है. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें अपने पेरेंट्स से या काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए. ये नहीं कि उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहो, खुद में ही परेशान हो, खुद में ही उससे जूझते रहो, जिसकी वजह से आप गलत चीज़ों में पड़ जाओ. राइट, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू. वो आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं. सो ऑलवेज गो एंड टॉक टू देम. दे शुड प्लान एंड ट्राई टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन क्रिएटिव. या आपको लग रहा है कि आप उससे बाहर आने में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो हमेशा आप कुछ क्रिएटिव करने का सोचिए,
कुछ अलग चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने का सोचिए, जो आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपको करना पसंद हो। किसी को पेंटिंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, या किसी को यू कैन से कुछ पोस्टर्स बनाना पसंद है, सो यू कैन गो एंड इन्वॉल्व इन टू डैट, राइट। एंड यू कैन से अपने आप को उन चीज़ों से हटा लेना चाहिए जो गलत चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपके दिमाग में घूम रही हैं, ठीक है। अवॉइड करने के लिए या उनसे थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव लाइक द वीडियो टिल नाउ। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो नहीं आया, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।